sequence, use BLAS P. If you want to do the BLAS X, translation related, or translation related BLAS N, or translation related BLAS X. So there are different flavors which I have mentioned during my presentation. So you can see, you can define the job title by yourself, or if you enter the accession number, it will already define the job title for you. But you can also rename it and do it by yourself. Okay, so let's move to the databases. So usually you will get this portion selected, this one. But remember, this is just human genomic plus transcriptome data. It will not include the viral genome or something else. So for that reason, you always select other. From other, now you have, as I mentioned, there are different databases available. So the best one is you use NR database. NR is actually a non-redundant database. All the sequences which have been submitted within the NCBI are curated and then are preserved within the NR database in a format that they are non-redundant. So you just select the NR database. When you select the NR database, now you can see the program selection. Within the program selection, you see the optimized for. So there are three flavors of BLAST-N available. It's a mega BLAST, BLAST-N itself, this continuous mega BLAST. So it depends upon type of sequence you have. If you don't know, you just select the BLAST-N. If you want to search very similar sequences, you will just select the mega BLAST. And you can just, it's like a window. You can open the window and it will increase the number of results for you. Okay, so up till here we're clear. So logarithm parameters, we can select how many maximum target sequences we want. I think it's silly to have 100 at the moment because there are a lot of sequences now. Over 1 trillion sequences are available. If you just put 100, it will not give you the dissimilar sequences. If you want to see the distantly related genomes, you need to put maybe 500 or sometimes 700. I was reading the book, The Phylogenetic Tree Made Easier, How to Do Manual. That is actually the syllabus book for the bioinformatician. So in which the author suggests that must be 500 when you want to search for the dissimilar sequences. As also I mentioned that if you want to search a very divergent sequence, you need to have 500. But for the sake of this presentation, to get the easy results, we are just working with 100. Okay. So other things are out of scope. Let them as they are for at your stage. We can discuss it later. If you need to see some specific answers or definitions that what it do, you can just click on the question mark on the side and they will give you some explanation about everything. There is a maximum number of line sequence to display. So that's how they have provided manual within the BLAS website so that you can get all the results easily and you can get your answer more precisely. Okay, so Mega has a problem that you don't select these two results in your window because Mega will not show you that. If you are working with Mega, you just leave it no tick here, leave it like this. But if you are working on your browser, you can use this option and it will take you to another window and you can get the results in your window and your query sequence will also be saved. So for the sake of understanding, if you know that your sequence is from the NR database, as we know our sequence is a bacterial sequence, so I can just type something like bacteria. It will give you the options. That's how you can reduce the timing. You can reduce and increase the speed of your results. But if you don't know anything that from which origin your bacteria is, you just leave it empty. So I usually select when I know. And you can also write so it will provide you all the sequences. So that's how you can restrict the search to very specific. So as we discussed before, it's very important what we are looking at and where we are looking at. So if you provide just like this, it will be more time consuming and the other sequences which will be arise if you already know that your sequence is from a bacterial origin and the other sequence if arises. So that will be of almost no use for you. So that will be silly if you know
that from which sequence, which bacteria you have the sequence. For the sake of our class, if you don't know, we will leave it empty. You can just click on the blast and it will take some time. If you have your NCBI account is free. If you have NCBI account, it will save your search results. If you are submitting sequences, you need to have Bankit account, and that's also linked with NCBI. So it's preferable that you always use your NCBI account. You do a login because it will save the results, and later on you can access those. Otherwise, if you do and close your computer and close the tabs, you will no longer access your results. So you have to do it again and again. So before this class, I was not very much aware that NCBI has once again updated their blast output. So the day before yesterday, while preparing for this assignment, I was looking for that, and it took me some time to understand this new output format. This is the, you see, it's just an update came 3 days before, and I'm very thankful it didn't came today. Otherwise, it will become a little messy to explain to you. So if you, the traditional ones were pretty simple. Actually, now they are making it more user friendly, so that's why they are updating the output. So as we don't need to go for the traditional outputs because they will discard it soon. So here is the results. So this is the job title. You remember we gave a job title, or NCBI gave it by itself? Yeah. So there is a program which we use. The citation means the paper, and then database is the, which database we use. We use nucleotide database and our redundant database. So the query ID which we provided, the description, that's the thermotoga, something like that. And then it's a molecular type is a nucleic acid, and the query length. What was the sequence? You remember we selected a range. That range was almost 1442 exact, and almost over near about 1500. So this is the result section. So the result section you have description, graphical summary, alignment, and taxonomy. In the description section, you see that your results are getting after blasting, which are the homologs or similar results. जो रिजल्ट आप लोगों के मिलेंगे वो अपना कहते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि पहला आईडी जो है उसकी 100% आइडेंटिटी क्यों आई है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सेशन नंबर दिया था, तो उसने उसी के साथ ही ब्लास्ट किया ना, तो उसने सबसे पहले उसी को लिख दिया कि यार ये 100% आइडेंटिकल है, ठीक है। वैसे समटाइम्स सीक्वेंसेस डिफरेंट यानी डिफरेंट रीजन से भी हो सकते हैं और तब भी 100% आइडेंटिकल हो सकते हैं। अगर आप जो हमने मर्स के पाकिस्तान के 2 सीक्वेंस देखे थे वो 100% आइडेंटिकल थे पार्शियली, ठीक है। वो दिनों अभी हम कर रहे हैं तो हम बाद में उसके डाटा अवेलेबल होगा। अच्छा जी, हमने डिस्कस किया ई वैल्यू, एक्सपेक्ट वैल्यू। इस अब हमने जैसे कि पहले बात की थी कि इट्स सिमिलर टू अ पी वैल्यू। आप इसको जनरल लेमैन टर्म में पी वैल्यू कह सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथमेटिशियन से बात कर रहे हैं तो आप पी वैल्यू नहीं कहते उसको, ठीक है, आप ई वैल्यू कहते हैं। पी अब ई वैल्यू जितनी 0 के करीब होती है उतनी ज़्यादा बेहतर होती है। 10 की ताकत -3 जो है ना, 10⁻³ दैट इज अ गुड कट ऑफ, ठीक है, दैट इज अ गुड कट ऑफ। और क्यूरी कवरेज 60% इज अ गुड कट ऑफ व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंस। ओके जी, अब आप देखेंगे यहाँ पे ई वैल्यू जो है थोड़ी सी बोल्ड हुई है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। आप इनको अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आइडेंटिटी के, ई वैल्यू के, क्यूरी कवर के, टोटल स्कोर के और मैक्सिमम स्कोर के। मैक्सिमम स्कोर वो होता है जो स्कोर अपना कहते हैं जब अलाइनमेंट बनती है तो लास्ट का जो लॉगरिथम पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसका जो स्कोरिंग मैट्रिक्स है उसको एक स्कोर देता है, ठीक है, वो होता है मैक्सिमम स्कोर। अगर मैक्सिमम स्कोर और टोटल स्कोर डिफरेंट हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अपना कहते हैं जो आपका सीक्वेंस है ना वो एक ही अपना कहते हैं जीनोम के साथ ना बार बार जो है ना अपना कहते हैं उसको अपना हिट कर रहा है, ठीक है। उसमें फिर आपको विजुअली जाकर ज़्यादा देर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अपना कहते हैं आपका जो सीक्वेंस है वो किस तरह अपना कहते हैं कौन सी रेंज जो है वो आपके लिए बेहतर है सेलेक्ट करना। जैसे कि हम देखते हैं पहले वाले को, देखिए इसका मैक्सिमम स्कोर है 2775 whereas total score is 3106 so अगर आप इसको क्लिक करेंगे it will take you to the alignment section. This is the alignment, okay. So here you will see that
नंबर ऑफ मैचेस आर 5। सो ये सीक्वेंस एक ही सीक्वेंस को 5 डिफरेंट जगह के ऊपर मैच कर रहा है। अब हमने डिसाइड और देखना है कि कौन सा जो है बेस्ट मैच है जो वाकई हमें लगता है कि ये जो है ये होना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्ट वैल्यू इसकी 0.0 है। आइडेंटिटी सबसे पहली चीज आपको ना ये चीज से पता चलती है, आइडेंटिटीज। ठीक है, इससे आपको ऐसा पता चलता है आपको अपनी क्यूरी जो लेंथ है ना उसका आइडिया होता है। जितना ज्यादा लेंथ, जो ज्यादा लेंथी होगा ना, आपकी पहला बेंचमार्क ही होता है क्यूरी ज्यादा से ज्यादा कवर हो। जिसकी क्यूरी कवरेज ज्यादा होती है उसका अपना कहते हैं रिजल्ट बेहतर आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, गैप्स, देयर आर नो गैप्स है। स्टैंड प्लस प्लस, आपको पता है प्लस प्लस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, इस फंक्शनैलिटी भी नहीं। अब पता है हमारा जो डबल हेलिक्स मॉडल है ना, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रैंड है, एक नेगेटिव स्ट्रैंड है। तो समटाइम्स हम साइंटिस्ट जो है अपना कहते हैं नेगेटिव स्ट्रैंड सबमिट करवा देते हैं, या आप समटाइम अपना कहते हैं रिवर्स कंप्लीमेंट सीक्वेंस को अपना कहते हैं ब्लास्ट कर लेते हो। तो अगर आपका दोनों की ओरिएंटेशन सेम नहीं है तो फिर प्लस माइनस लिखा आता है, अगर दोनों की ओरिएंटेशन सेम है तो प्लस लिखा आता है। तो हम ये बात याद रखेंगे कि जब हमें अलाइनमेंट बिल्ड करनी है तो सबकी ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। अगर आप प्लस ओरिएंटेशन में काम कर रहे हो यानी आप कंप्लीमेंट में काम कर रहे हो तो अपना कहते हैं प्लस में करोगे। अगर रिवर्स कंप्लीमेंट में काम कर रहे हो तो माइनस में काम करोगे, तो सारे सीक्वेंसेस आपके माइनस में होने चाहिए। ठीक है, ये बात हमें लगी सबको? अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ रेंज 1। ठीक है, अभी हमने रेंज 1 देख ली। अब हम देखेंगे कि व्हाई वी सिलेक्ट रेंज 1 एंड व्हाई वी डोंट सिलेक्ट रेंज 2। टोटल 5 रेंजेस हैं। ठीक है, पहली बात आपने देखी रेंज 2 की क्यूरी जो है सिर्फ 259 न्यूक्लियोटाइड की है। हमारा सीक्वेंस कितना बड़ा था? ऑलमोस्ट 1400। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रेंज 2 में है सिर्फ 259 न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब है क्यूरी कवर जो है बहुत कम है। ऑल्दो आइडेंटिटीज आर स्टिल गुड, ऑल्दो ई वैल्यू इज स्टिल बेटर, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर हमारी क्यूरी जो है कवरेज जो है वो बहुत कम है, काफ़ी कम है। और सबसे ज़्यादा क्यूरी कवरेज जिसकी होती है हम उसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा मैचिंग उसी के साथ हो। लेकिन क्यूरी कवरेज का ये मतलब नहीं है कि अगर अपने उसमें गैप्स बहुत ज़्यादा आ जाए। ठीक है, क्यूरी का मतलब है कि हम उसकी आइडेंटिटीज़ भी देखते हैं कितना वो आइडेंटिकल है। इसी तरह रेंज 3 में आप आ रहे हैं, अब देखेंगे कि 68 सिर्फ 81 की क्यूरी कवरेज है इसकी। रेंज 4 में आ जाएंगे 69 की है। ठीक है, और अपना कहते हैं रेंज 5 में आ जाएंगे तो 107 के। स्टिल ई वैल्यूज आर क्वाइट गुड, लेकिन अपना कहते हैं जो डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम आ रही है हमें वो आ रही है रेंज जो है क्यूरी कवर जो है वो बेहतर नहीं है। ठीक है, दैट्स वन वे यू आइडेंटिफाई दैट कौन सी रेंज को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी हम दोबारा जाते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। अच्छा, डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर आपको अब टोटल स्कोर और मैक्सिमम स्कोर का समझ लग गई, क्यूरी कवर का पता चल गया। इसके बाद ई वैल्यू की हमने डिस्कस की, पर्सन आइडेंटिटी की हमने डिस्कस किया, एक्सेसेशन नंबर्स, एक्सेसेशन लिंक्स। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये अपना कहते हैं और टैब ओपन हो जाएगी। इस टैब के अंदर अपना कहते हैं आपको उसी जो आपके जीनोम के साथ मैच हुआ है उसका एक्सेसेशन जो लिंक है वो आ जाएगा। जैसा ठीक है, इस वेरी आपने जैसे कि बात की थी कि जो बैक्टीरियल जीनोम काफ़ी बड़े होते हैं तो इस वजह से अपना ये कहते हैं इसको लोडिंग में भी टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, इट्स क्वाइट अ बिग जीनोम। ठीक है, वो भी सारा कुछ जेनबैंक फॉर्मेट के अंदर है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ये अवेलेबल है इसके अंदर। अच्छा जी, ये हमने डिस्कस कर लिया सारा ब्लास्ट। अच्छा, डिस्क्रिप्शन भी होगी सारी। इसी को हम अपने ब्राउज़र में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इसको रिपीटेटिवली देख लेते हैं कि ब्लास्ट को हमने अगर अपने ब्राउज़र में कैसे परफॉर्म करना है, ताकि अपना कहें सिमिलर ऑप्शन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ये आपको पॉपुलर रिसोर्सेज में ब्लास्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपने ब्लास्ट में क्लिक करना है। आपने हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आ जाए तो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को क्लिक कर लेंगे। सिमिलर वही चीज़ें हैं, सारी वही चीज़ें रिपीट होगी। ठीक है, तो हमारे पास टाइम थोड़ा मैं इसको स्किप करता हूँ। ठीक है,
इसके अलावा आप अपना ये कहते हैं, ये हम बात कर ली प्लस माइनस की बात कर ली, यू कैन आल्सो लोड योर अलाइनमेंट डायरेक्टली इन मेगा व्हेन यू आर वर्किंग विद मेगा ब्राउज़र। मैंने यहाँ पे सारा बताया हुआ। आल्सो अपना ये कहते हैं, मैंने मेंशन कर दिया कि हमने रेंज 1 को क्यों सिलेक्ट किया है, व्हाई वी डोंट ऐड रेंज 2 एंड रेंज 3 इन आवर रिजल्ट्स। ठीक है जी। तो इससे असाइनमेंट 1 जो हमारी कंक्लूड होती है, और आई थिंक यू गाइस रियली नीड टी। सो आप